गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल के वीडियो में हमने थर्मोडायनामिक के जो बेसिक कंसेप्ट है, टर्मिनोलॉजी, वो एक्सप्लेन करके आपको बताया था। उसमें हमने देखा था एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको जितना अच्छा हो सके उतना बताने का प्रयास किया। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सेस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, एक्सेस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी या एक्सेस फंक्शन क्या होता है। जैसे कि हमने दो सॉल्वेंट लिए, एक 5 ml और दूसरा सॉल्वेंट 7 ml। अगर दोनों को भी हमने मिक्स कर दिया तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो हमें 12 ml मिलना चाहिए, मगर वो वॉल्यूम 12 ml के बजाय 11 या 13 ml अगर मिलता है, यानी कि उसमें उसका वॉल्यूम जो मिलना चाहिए था मगर वैसा नहीं मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो हम उस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसी प्रकार से अभी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, उसमें अभी ये एक्सेस फंक्शन का क्या रोल होता है ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। द चेंज इन द इंटरैक्शंस मीन्स दैट फॉर अ रियल सॉल्यूशन द एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग फॉर अ रियल सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमको मिल रहा है उसका एंथैल्पी चेंज जो मिल रहा है सॉल्यूशन, हमको कौन सा सॉल्यूशन मिलने को होना था, 12 ml, नहीं क्या 5 ml हमने सॉल्वेंट ए और 7 ml सॉल्वेंट बी लिया, दोनों को मिक्स करके हमें जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो 12 ml मिलना चाहिए था, मगर 12 के बजाय वो 12.5 या 13 ml मिल रहा है। तो वो जो 12.5 या 30 ml वैल्यू रहेंगी वो रियल सॉल्यूशन की रहेंगी। एक्चुअली कितना मिलना चाहिए था, 12 ml, बट मिल कितना रहा है, 12.5 या 13 ml। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ रियल सॉल्यूशन is not equal to 0 if there is a ordering of the molecule within the mixture. If there is a ordering of the molecule within the mixture, the entropy of mixing will also be different from the observed for an ideal solution. If there is a ordering of molecule within the mixture, that means if the solution contain ordering of the molecule, that means all the molecules are in a ordering arrangement, then entropy of mixing will also be different from that observed for an ideal solution. So that gradius means change in entropy, change in entropy of a real solution is not equal to the change in entropy of आइडियल सॉल्यूशन। दैट मीन्स एंट्रोपी चेंज आइडियल सॉल्यूशन का और रियल सॉल्यूशन का और आइडियल सॉल्यूशन का एंट्रोपी चेंज वो इक्वल नहीं रहेगा। डेविएशन फ्रॉम द आइडेंटिटी कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ अदर क्वांटिटीज अपॉन मिक्सिंग। फॉर एग्जांपल, इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टेट्राक्लोरोइथीन, is added to cyclopentene, if we add the tetrachloroethene into a cyclopentene, the volume of resulting mixture is found to be less than the total volume of the separate component. यही बात होगी जो हमने अभी की थी कि 5 ml एक सॉल्यूशन लिया और 7 ml दूसरा सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स किया तो हमें 12 ml मिलना चाहिए था, मगर यहाँ पे बता गया है कि 12 ml के बजाय वो 11 ml या उससे कम 12 ml से थोड़ा कम मिल रहा है। तो एक्सेस फंक्शन और एक्सेस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू मेजर्ड फॉर रियल सिस्टम
the value measured for real system, and that can be calculated for an equivalent ideal system, or the difference between the actual value of the mixture and the value for ideal mixture. अब ये आइडियल वैल्यू कौन सी हो गई हमारी 12 ml, और जो रियल वैल्यू कौन सी हो गई जो हमें मिल रही है 12 ml के बजाय 11 ml, 11.5 ml, या 12 से ऊपर भी मिल सकती है 12.5 ml, 13 ml, तो उनका जो डिफरेंस रहेगा उसको हम एक्सेस फंक्शन बोलते हैं. एक्सेस फंक्शन is the difference between the actual value of the mixture and the values for an ideal mixture. Now in the next slide we again explain the excess thermodynamic properties, like excess Gibbs free energy. Excess Gibbs free energy is equal to the change in Gibbs free energy for a real solution minus change in free energy for ideal solution. That means it is the difference between the change in a free energy of a real solution and change in a free energy of ideal solution. Also we can calculate the excess entropy by using similar formula. The excess entropy is equal to the change in entropy is denoted by the letter S. Excess entropy is equal to the change in entropy of a real solution minus change in entropy of ideal solution. Similarly we again calculate excess enthalpy. Excess enthalpy is also calculated in a similar way. The change in enthalpy of real solution minus change in enthalpy of ideal solution. But we know that the change in enthalpy of ideal solution, change in enthalpy of ideal solution, that means grad H ideal, is always remains constant. That means it is equal to the 0. Therefore excess enthalpy is always equal to the change in enthalpy of real solution. Similarly in case of excess volume, the same formula can also apply for this excess volume. Change in volume of a real solution minus change in volume of a ideal solution. But in a similar manner the change in a volume of ideal solution is always again equal to a 0. Therefore this formula becomes equal to the change in volume of a real solution. The excess enthalpy and volume. Now here some informations are given. The excess enthalpy and volume are both equal to the observed enthalpy and the volume of mixing, because the ideal values are 0 in each case. Ideal values are 0 in each case. The deviation of excess energies from the 0 indicates the extent to which the solutions are non-ideal. The deviation of excess energy from 0 indicate the extent to which the solutions are non-ideal. After that we are discussing here a thermodynamics of a mixing. There is some introduction parts are given here. When solid, liquid and gases are combined, the thermodynamic quantities of the system, when solid, liquid and gases are combined, then thermodynamic quantities of the system experiences a change as a result of mixing. This module will discuss the effect that mixing has on a solution, Gibbs free energy, enthalpy and entropy, with a specific focus on the mixing of two gases. Suppose two different components like solid, liquid and gases are combined, then there will be a changes takes place in a thermodynamic property like Gibbs free energy, enthalpy and entropy. Suppose here two gas are given. There are two different colors are used for
two different gases. That means here gas A is shown by the blue color and gas B is shown by green color. Suppose two gases are mixed to each other, then what happened? These molecules of gases are shows these molecules of gases shows intermolecular interaction with each other. That means the force of attraction or repulsion between the molecule A and B. If these forces of attractions or repulsions shows a similar or equivalent nature, then such a solution is called as the ideal solution. But in case of a non-ideal solution, that means these forces of attraction or repulsion are not equivalent, therefore it shows a compression as well as expansion. Therefore the volume of the resultant solution increases as well as decreases. Now let us discuss here the entropy of mixing. That means what is the change observed in case of entropy when the two gases are mixed to each other. Suppose there are two gases mixed with each other, then which type of changes is takes place in entropy. Discussing here, when number of gases mixed together, the entropy change accompanying with this process is called as the entropy of mixing. That means there is some entropy change is called as some entropy change are observed, this is called as the entropy of mixing. Or entropy of mixing is defined as the difference between the entropy of the mixture of gases and the sum of entropies of separate gases. That means here we find out the difference between the entropy of mixture of gases, entropy of mixture of gases, and the sum of entropies of separate gases. That means it is also called as the difference between the entropy of real gas and entropy of ideal gas. When two pure substances mix under normal condition, there is usually an increase in the entropy of the system. Suppose when the two components added to each other, then there is a possibility of increasing the entropy of the system. This is qualitatively easily visualized in terms of increased disorder brought about by mixing. Entropy is also called as the measure of disorderness. When two solutions are mixed with each other, then there is a disorderness in the molecules of solutions is increases, therefore entropy is also increases. For it can be visualized, that means by taking an example to show why the entropy is increases after mixing. For the mixing of two ideal gases, it is straightforward to obtain an expression for the entropy of mixing. Since the molecules of ideal gases do not interact, the increase in entropy must simply result from the extra volume available to each gas on mixing. Thus, for gas A, available volume has increased from V1 to V2. That means when the gas A and gas B, here we are taken here one of the example, gas A and gas B when mixed with each other, then the particle in gas A get a large volume. Particles in a gas A get a large volume. That means combined volume of gas A and gas B, that means it becomes twice. हम उसको डबल नहीं बोल सकते, डबल या उससे कम ज़्यादा, यानी कि दो गैसेस हम मिला रहे हैं तो गैस ए और गैस बी दोनों का वॉल्यूम कंबाइन होके जो गैस ए के पार्टिकल है उन सभी को वो गैस ए के पार्टिकल टोटल वॉल्यूम में घूम सकेंगे या डिसऑर्डरनेस क्रिएट कर सकेंगे.
गैस बी के जो पार्टिकल है उन्हें भी उतना ही वॉल्यूम मिलेगा। देयरफॉर द रैंडमनेस एज वेल एज डिसऑर्डरनेस ऑफ constituent particle in that solution is increases. That's why the entropy of mixing of two different gases is also increases. अगर डिसऑर्डरनेस बढ़ता है तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने एक्सेस फंक्शन को समझाने का आपको प्रयास किया है। और यहाँ पे एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और उसके एक्सेस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपको बताने का प्रयास किया है। आप अच्छे से अच्छी किताब पढ़ के भी ये समझ सकते हैं। अभी ये कोरोना वायरस की वजह से हम ये लेक्चर जो है वो लाइव लेक्चर जो है ऑफलाइन नहीं ले सके, इसलिए ये हम ऑनलाइन में आपको पढ़ाने का प्रयास किया। है तो आप भी एक अच्छी सी किताब लेके इससे अच्छे से पढ़ेंगे, यही आपसे अपेक्षा करता हूँ। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।